So welcome back on this wonderful platform on ABCD International Family. I welcome you all on this wonderful evening. So myself, Akash Babad, founder CEO of ABCD International Family, Babad International Publication, Babad Fields. I welcome you all once again. So आज हम लोग यहाँ पे एक समिट के लिए ज्वाइन हुए हैं. वी आर लिसनिंग बहुत एक्सपर्ट लोगों से हम आज कुछ गाइडेंस लेने वाले हैं एंड एक सेंसिटिव टॉपिक को लेके डिस्कशन करने वाले हैं. आई होप सभी को इस पर्टिकुलर टॉपिक का बहुत बेनिफिट मिलेगा. एंड जिस तरीके का ये रजिस्ट्रेशन चल रहा था, जिस तरीके का रिस्पॉन्स लोगों से आ रहा था, या जो प्लानिंग चल रहा था, बहुत ही ऑसम था. और वो काफी एक्सपीरियंस को लेके इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, समिट को स्टार्ट कर रहे हैं. एंड आई होप आप सभी जिस एक्सपेक्टेशन से ज्वाइन किए हैं वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो. बिफोर स्टार्टिंग समिट में जस्ट कुछ बातें एबीसीडी के बारे में या जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में बताना चाहूँगा. सो एबीसीडी इंटरनेशनल फैमिली इज ट्रेनिंग कंसल्टेंसी. इसमें बहुत सारे डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं. एंड जब लॉकडाउन से शुरुआत हुआ था ऑनलाइन जर्नी का, एंड तब से बहुत सारे वेबिनार्स और समिट्स और इंटरनेशनल स्पीकर्स के साथ कंप्लीट किए गए हैं. अराउंड 25 प्लस वर्चुअल समिट्स, नेशनल समिट्स कंडक्ट किए हैं. एंड उसी के साथ साथ पब्लिकेशन एंड ट्रेनिंग्स में मिल के वी हैव 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंड स्टिल वी आर वर्किंग ऑन फ्यू मोर. सो बहुत सारे डिफरेंट स्पीकर्स ज्वाइन करते हैं. उनका एक्सपीरियंस को लोगों को यहाँ पे, उनके नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस को यहाँ पे सुनने को मिलता है. And let's start today without wasting so much time. So we would like to invite our today's first guest speaker with us, Dr. Uma Kumare ma'am. She is an educator, principal. She's from MP. And I welcome Dr. Uma Kumare ma'am on this wonderful evening on this ABC International platform. And over to you, ma'am. Thank you so much, Babar sir. Good evening, everyone. Myself, Dr. Uma, and as per the topic related, I am here to talk about the history brief and the theme significant of the today's event. As we all know, today is the World Suicide Prevention Day, and each and every 40 seconds we are losing That's food. Keep it nice. Yes, thank you. One person in the world. So over 7 lakhs people commit suicide each and every day across the world. So it's the third leading cause of the death among the 15 to 29-year-old globally. So it's very important to bring the attention to the rising number of suicide cases across the world. Every year, the World Suicide Prevention Day is observed on September 10th to spread the awareness about the suicide prevention, about the how we can reduce its related stigma and help the persons. IASP, the International Association Suicide Prevention, along with the WHO, World Health Organization, that together highlight the importance of community support and early intervention for the preventing life on this day. So suicide, as we all know, it has a number of complex and interrelated underlying contributing factors that can contribute to the feeling of pain and helplessness, having access to meaning to kill oneself. So it's a very sensitive topic, and we all, the intellectual persons and the persons related with this field, know very well that how vast its socio-economical factors are nowadays. So thank you, Babar sir and ABCD International to bring such a sensitive topic in the acknowledgement of the persons who are working for it. Related for the theme of today's day, it's the World Suicide Prevention Day, changing how we change the narrative regarding the suicides. Let's start the conversation. The theme aims to change how we can talk about the suicide and break down its silence and stigma that surrounds us. With the call of action, how we start the conversation to the sensitized person or the persons who are suffering from these disorders. So we are having so many psychologists among us, educators and others. We will talk later on this. I'm just here to brief about the theme. So this theme particularly aims to raise the awareness and the importance of reducing its stigma related with the
suicide. So, World Prevention Day is a day dedicated to improving global awareness that suicide is preventable and to increase over the conversation about the mental health. Regarding the history of World Suicide Prevention Day, the first World Suicide Prevention Day was launched in Stockholm on September 10th, 2003, and it was earlier an initiative by the International Association for Suicide Prevention and the World Health Organization. It was established to draw attention to the global issues to suicide and reinforce the important message that suicide is preventable. If one person can be approached, or if we may approach the person just before it's committing the suicide, so we may prevent it. So the day serves as an international platform to raise the awareness, reducing its stigma, and emphasize the government organizations and the public that suicide prevention is possible. So the theme for 2014 regarding the Suicide Prevention Day is it's a triennial theme for the World Suicide Prevention Day. For 2024, continues with the 2026, and it is changing the narratives on suicide with the call to action. Let's start the conversation, and this theme emphasizes the importance of reducing related issues. The purpose behind the theme is the World Suicide Prevention Day seeks to change the perception about the silence and stigma, to understand the support, urging everyone to contribute to a more compassionate and informed approach to the mental health. The call to action, the start the conversation. अगर हम भारत की बात करें, अगर जो सुसाइड आत्महत्या का कारण और आत्महत्या की दर पर अगर हम भारतवर्ष में बात करते हैं, तो जो 2022 का आंकड़ा था 1.71 लाख, तकरीबन 1,70,000 हजार लोगों ने सुसाइड कमिट करी थी, जो 2021 की जो दर थी उससे 4.2% अधिक, और 2018 से लगभग 27% अधिक थी, और 2016 से 36%। तो इस तरह से हम देखेंगे कि दिन प्रतिदिन कैसे हमारे आसपास के लोग इस आत्महत्या जैसे घातक कदम उठा रहे हैं, और ऐसा क्या कारण है लोग लगातार सुसाइड कमिट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कम पढ़े लिखे, इनफैक्ट जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो बुद्धिजीवी है, जो ऑफिसर क्लास है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, और महानगरों में खासकर, तो कैसे अलग अलग फैक्टर इस आत्महत्या को प्रोवोक करते हैं, कैसे जेंडर, एजुकेशन और लोकेलिटी, हर चीज इस को प्रभाव डालते हैं। ये अलग अलग एक्सपर्ट्स हमारे साथ आज उपस्थित हैं, और क्योंकि बहुत एजुकेटर्स और एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, इंजीनियर्स, साइकोलॉजिस्ट और एजुकेटर्स हैं, तो आगे के टॉपिक्स हमारे बहुत इंटरेस्टिंग है और विद एक्सपर्ट्स हैं। तो मैं ब्रीफ को आज यहीं खत्म करके अपनी नेक्स्ट जो सेकंड स्पीकर हैं, डेफिनेशन ऑफ सुसाइड विद द नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स, उनके लिए मिस्टर रविंद्रनाथ रेड्डी जी को स्विच ऑन कर। थैंक यू बाबा। Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Uma, ma'am, for the wonderful session and information. So, we'd like to invite another guest speaker with us, Dr. Mr. Ravindranath Reddy, sir. So, welcome, sir, on this wonderful evening once again, and over to you. Thank you for inviting me, Akash. And I'm feeling grateful to be part of suicide prevention initiative by ABCD International Family. And I have mixed feeling, like I'm happy to help with prevention. And I don't want to speak about suicide actually, because suicide is the thing which we have to prevent. But okay, but we have to accept the fact that there are so many suicides are happening around us. And I'll be talking about definition of suicide and statistics, which are some of them mentioned by Uma Madam already. And by the definition, suicide means it is deliberately taking one's own life. It might have complex behavior with different factors, like it can be because of psychological distress or environmental stressors or untreated mental health. And also, suicide often linked of feelings like hopelessness, depression, anxiety, isolation, loneliness. It can be caused due to so many factors. As psychologists, it is very much important to talk about it and spreading awareness. It involves to identify one's early warnings, underlying issues like trauma, self-esteem, and emotion regulations of any of our clients. And due to our observations, we can identify people who are going with different emotional unbalanced situations. When we talk about statistics globally, as some of the statistics mentioned by women,
and 7 lakhs people globally committing suicide, which is equal to one death for every 40 seconds. And it is fourth leading causes of death globally. And the major fact is 15 to 29-year-old people are committing more suicide. Geographically, it might vary. Like each country will have different statistics. When we compare in that way, high income countries have suicide rate of 11 per every 1 lakh. Low income and middle income countries have a bit lower rate than that, but still it is having 77% of global accounts with the suicide deaths. Men are 3 times more in suicides, but although so many attempts more than men, women are trying to attempt more suicides. And also, like when we compare globally and India-wise statistics are like 1,64,000 deaths in 2021 alone. According this rating is according to National Crime Record Bureau, and suicide rate is 12 per 1 lakh people each year, and 70% of them of male, as I mentioned already, and leading cause of death between 15 to 29. And this age will be varying through geographically. In US, 10 to 24, it is more leading cause of death, and in India, it is 15 to 29 age people. And for farmers also, like every year there are more than 10,000 farmers committing suicide, and each will be varying. The causes will be different and geographically different. If you take example of USA, 49,000 people committed suicide in 2022 alone, which means one suicide in every 11 minutes. And if you see, it is second leading cause of death for 10 to 24 age people. And 50% of suicide methods are firearms in USA. And it will be varying for each country. As example, I'm talking about USA, and it will be varying to each country in different way. And how can we prevent? How can we intervene? Like globally, there are so many initiatives taken care by WHO by giving mental awareness to people. And because of these interventions and mental awareness programs and mental wellness programs taken care through different NGOs, there is 20% chances or like prevention can be done. So we all have to work towards in that way to prevent more suicides through all these initiatives, which are already we are talking about these awareness programs, whichever NGOs are taking. And if you talk about India initiatives, there are so many preventive cares are going on, like creating helplines, suicide prevention cells, and giving awareness programs in college wise, like that. All these preventions, slightly it is getting reduced, but still there is so much need of improvements are required in the name of these suicide prevention activities. And when we talk about mental education in so many schools, we are very much lacking behind, because 0.75% of for 1 lakh people psychiatrists are available, which is there is a lot of demand in improving all these psychological aspects and wellness programs in school level. So, and also there is a lot of need to create safe environment for teenagers to talk about their feelings, to express themselves with anybody. Like at least there should be one safe environment in each school and colleges to talk about their personal feelings, their personal opinions. Even through that also there will be a reduction of 15 to 20% of suicide rate among teenagers especially. So all these statistics will help to analyze, assess suicide rates among us. But to change all these percentages, there is a lot of need in improving the awareness programs, and we all have to work together in the direction of suicide prevention. This is all about all these statistics. It might be varying. Different regions will have different
aspects in it. And thank you for inviting me, Akash. And thank you. Over to you, Akash. So thank you, sir. And sorry once again, you may co-introduced Bulgata. So, sir is engineer also, and also MA in psychology. He's a member of uh, psychological, sorry, just a minute, Andhra just Pradesh secure. State Counseling Psychology Association Yes, is yes, there. I'm yes. part of it, and I take care of teenage trainees. And I Awesome. mostly help with the teenagers to make them so much powerful for the future, to get out of all these suicidal tendencies and to be more powerful than whatever they are. No. So, Yeah. so he is actually contributing in people's life, and जब हमारा connection हुआ था, just एक message पे he's ready to help people. It's really amazing. ऐसे ही लोग कुछ करते हैं लोगों के लिए, तो it gives more right. Thank you once again, sir, for the wonderful session. Would like to invite our another speaker with us today. He is very experienced and a clinical psychologist. Dr. Nandlal Gupta sir. So he उनका बहुत experience है, काफी contribution उन्होंने की है. So I would like to invite Dr. Nandlal Gupta sir. Welcome sir, and Hello. Am I audible, sir? yes sir, yes sir. Okay. Okay. Thank you very much for inviting me for this important, day. And it's very important topic in the sense we are now witnessing a rise in suicides, and the theme is very much important in changing the narratives on suicide in view suicide prevention in view of the various studies conducted in the past and the recent time. My topic would be knowing high risk groups for suicide. By giving this talk, I would expect that people will be aware of various groups so that they can be cautious of such kind of tendencies which is called as suicidal thoughts, or maybe suicidal attempts, or suicidal committing suicide. So people should be aware that which group is more prone to suicide. Now, first of all, I would take males and females. Of course, it has already been talked, but there are variations in the studies, and males have been stated to be 4 times more prone to suicide. Suicide means successful suicide, completion of the suicide act, right? And as compared to females, and it may be because of many kind of stresses, because they have to earn money, they have to face the social environment, they have to compete with the people in terms of progress, and other things, trauma, or many kind of family problems. So another group which is very prone, of course it is alarming that the younger generation is showing more suicide, and the group is 15 to 29 years old, and then 34 to 44 years group, and 65 years plus. Nowadays, people are moving to foreign country, people are moving to other places, metropolitans from the villages, from the other cities, and the parents are left of their own, and in old days they are intending to get rid of their life because the series of stresses they face, because the decline in physical health as well. Another group which is very much alarming is that is employment, and those who are not getting employment, and those who are facing financial problems because of the loss of job, or because of the competition they are not able to cope up with in the job, they have to leave the job, or somehow they are being victimized by their colleagues. So that group is also very showing a good number, quite a high number. And another group which is that of the married people, those who are divorced, separated, or especially women who are victim of the domestic violence. And these are also coming up, and because we are, especially in India, we are also following Western culture and our social
hello, our social values are declining, and social group is not showing that much of support. So in the face of such a scenario, the people who are uh, alone, they are prone to more suicide, and those who are single, living at a single place, managing all things without their sons or daughter, or not having sons or daughter, so they are more prone to suicide. Religion, in religion we find that Christianity is a factor. More Christian people are committing suicide than other religion group. Then mental health disorder, it's very very important, because our society is lacking in having awareness about mental health disorders. So most of the people only know depression or anxiety, but there are other illnesses or disorders, mental health disorders, which show high number of suicidal tendency, like schizophrenia, like bipolar, yeah, mood disorder, you may say. And then you have another, type of illness. Of course, alcohol and substance use is also nowadays diagnosed as mental health problems or mental health disorder. So these groups, another group is that of girls, especially teenage or even early in adolescence, later adolescence. So they are prone to uh, show much over concern about their physique, about their weight, about their overweight. So they are living, kind of food. They show lack of appetite. They don't want to eat even deliberately at times in the beginning. And such girls can also, have a risk factors, high risk factors, and one should be, try to identify such cases and bring to the notice of the um, experts. Then physical illness, of course, physical illness is also very important, and because it's a factor, big factor. It's a big group. Many people are suffering from physical illness, like many people have diabetes, many people have um, say heart problem, many people have dialysis, kidney problems, and at the after a series of problems, and then longevity will lead to having more and more ideas about committing suicide, and they sometimes succeed also. Then childhood abuse, neglect, or trauma in the childhood, and sexual exploitation. This group is also very much need attention, very much need support, very much need immediate consultation with the experts, mental health experts. Um, Another thing is the discrimination and social isolation in the society. Certain groups are there, like we have um, caste system here. Some people are, or tribal people, or other um, areas which are downtrodden, in the sense that people are very very poor and not able to meet their ends meet, and such people are also more prone. Poor people are more prone because of their resources, stresses, series of stresses they face, chronic pain, and terminal illnesses. This group is also prone to suicide. And one group is there which show some kind of losses, which face losses, maybe job loss, maybe some relation which is too much loved, um, or a source of inspiration or source of say support. So that group is also very important, and they may go to depression first and then lose their life because of the suicide. Access of to harmful means, we have arms, sometimes very much available arms at home, or there are other means to self-destruction. So these are also there, or even overflows. Children sometimes they get indulged in certain risk-taking activities, and that will also lead to suicide attempt. So if support is lacking, that we have to identify such people who are lacking too much of support, and social group may be formed for supporting them to avoid suicide.
suicidal acts. History of self-harm and those people who are showing, self-harm tendencies, or they are trying to attempt suicide again and again, may not succeed, for few attempts, but later they can do. This is also very potent tool, very important to learn. Even saying, even cautioning the parents or cautioning the relatives, that will be a kind of alarm to them. Impulsivity, sometimes there are some people who are prone to impulse and they cannot control that impulse to die, and that without any adverse circumstances they can commit suicide. And I've seen one professor and had in a medical institution who committed suicide because of only impulsivity. So such kind of. Would like to invite our another guest speaker with us on this wonderful evening, Mrs. Manavika Ghosh ma'am. She is a clinical psychologist from Mumbai. So welcome on this wonderful evening and Thank you so much, sir, and very good evening to one and all. Uh, my thanks and gratitude to ABCD International and as well as Baby Man who introduced to you. So we have this issues of suicide and the prevention. It is an alarming issue at present, we understand. The percentage, it just shivers us. So let us understand little in a deeper way, in a very simple manner, what I understood it. Life has an innate tendency to survive, to live, for sure. If we see an ant, it will also try its million different ways to survive. So for human being, of course, it will be the tendency to survive at any cost. But suicide is ending of life. Why this is happening? Let us understand it. Why the person is thinking to commit suicide or trying to end his life? Let us see that we all are in a journey, or we are driving the vehicle called life, isn't it? While driving the life, it is a long way. So the person who is trying to commit suicide, he is feeling like he or she, for any age, that there is no space further and not proceed further, right? Does it mean there is no space? Of course not. Does it mean that he or she is alone in the road? No. Then why? The other persons simply are unnoticing this fact, be it as a parent or a community. A person thinks to commit suicide and on that day he commits suicide. No, it is an attempt for days, finding no way, no space, nothing. But other persons, unfortunately, could not notice it. The symptoms very much visible, but it was not been taken care of. I would say especially the responsibility. I'm not blaming, but the special responsibility lies to the parents. Now, why the person got stuck in such a situation that there is no space further? First of all, I feel somewhere there's a lack of training of distress tolerance. Problem comes, it will come. Severe problem, mild issues, it is going to come because it is the process of life. But how we are armored to handle the problem, this is up to us. Moreover, how the support systems are there at home and the community. Moreover, and one more thing, we have a lack of knowledge that it's just an end. There is nothing further, fully frustrated. But whenever we feel it is an end, this is the creation is designed like this. Where there is end, there is a new beginning. And moreover, problems, drastic problems are the doorways of tremendous possibilities that we forget to understand it. Maybe the lack of knowledge as well, because we have seen here and there, all people are getting shattered with the problems, frustrated, no chance, nothing.
So he or she at any age understood this is the way, let us end this life. Without understanding the inner power invested by nature. So, who are the support systems? First, as I already said, home. Because the life, if we see little, deeper, where the life came from. At the home, now parents, how can a parent, because in Mumbai, there is a case, a boy, like teenage, uh, I, I don't know exact reason, but I have heard mother was working in a multinational corporation in a very responsible post. So son was little depressed, introvert. Introvert may be the trait, but he doesn't mean the introvert person will commit suicide. So mother was quite busy in that job. I'm not again blaming anybody. We are trying here. All these sessions are to enhance the awareness. That is all. Somewhere I think it is missing. Now, on that day, it was mother's birthday. So they all went for dinner or lunch, something like this. They told their son also to accompany. Then son to no, you please proceed. I don't want. So son was like the nature that every time he doesn't want to join any social parties or any kind of things. So this is the biggest symptoms of staying aloneness. Staying alone, what he or she is thinking, we should try to understand what he is thinking, what he is feeling, what he is experiencing, and what kind of behavior is showing. It is manifested, of course. Now, both the parents left. After dinner or lunch, they came back at home and they, when unlocked their key, they just saw their son was fainting. Now, let us understand this. On mother's birthday, somewhere there's a missing link. Could not lead the son also for professional help, or some missing links were there. So for parents, I have seen, and now we see the statistics in Kota, the suicide cases in and IIT, the institutions like IIT, the maximum suicide case. Parents having best and the best intention to do, they want every kinds of best, but out of the best intention, somewhere they are unable to connect with their children. What do they want? They somewhere feeling or focusing more on living, not on life. While I say living, living means study, get a certificate, then proceed towards the next premier institution. We need marks to enter into a good institution and then fetch a good job, good salary job. This social and economic status is maintained. This is about living. I'm not denying it is important. It is very, very, very important. But apart from this, what is important? Real life. Life is all about unfolding our own genius. Each and every life, whenever it is sent into this planet, has got its own specialty, own potential, uniqueness. As again I quote, the meaning of education is Swami Vivekananda told, manifestation of perfection already in man. That means each and every human being is born here with some kinds of perfection. The thing is this, it is not certain. Through education, we are trying to sharpen the perfection so that the eternal genius just gets unfold like a bud gets fully bloomed, isn't it? Now, if we are focusing on living only, we are altogether missing the uniqueness lying with this that boy or the girl, and finding difficult or may not be the difficult studies, whatever this student suicides are. I don't like. So this is the biggest reason and the consequences the parents community must see that whether the child is really liking that or not. Moreover, the teenage, as the statistics shows, up to year 29, this is the highest amount of suicides. Hormones and up to 24 x scientific data, the research shows that
our human brain takes the shape up to age 24. So restructuring period, several ups and downs, chemical changes. People are unable to connect. They are more busy with correct the children, unable to connect so that they can correct and to convey what it is good for the children. Again, if we see the societal part or the community part, it is very, very important because if we see this is my child and that is their child, here our commitment doesn't end because this creation doesn't understand the language of exclusion. This is mine and this is yours. It understands only and only the language of inclusion. If we see other child also needs trouble, needs our help, needs our support, whatever the way. Again, if we want to give the support, every time it may not be possible in spite of our good intention and the way we are trying, but still I feel in some way the community support should be enhanced so that how? So, through a compassion. Moreover, this biological impact and the comorbidities are there, the depression. This kinds of, because few days back in my clinic, one person came, I saw this mother is also in depression. And it is her trait, little bit in a depressive state. Now, next generation, it has become much more intense. Now, mother handle her life in some way, but whenever this intensity becomes too high, and now parents are also unable to handle it, and moreover, they are not trying to go outside for professional help. This stigma is very much there in India, especially, from which we want to make more and more awareness to come out from the stigma to get professional help. It's not that we are pagal hai. The fact is, we deserve to live a very good life because we are here. The way we want, we should live our life. That is why we should get a professional help. So, whenever people are trying, now also, one more aspect is that when people are thinking the life is getting too much, taking a toll, they are switching to some substance like alcohol, drugs. These are very much there just to reduce this burden. And ultimately, whenever people will find that these are the very short term, yet it is very dangerous for the long term, and it is leading to these kinds of suicides. So therefore, this awareness need to be built. This how do we live? Moreover, whenever we are trying to get this changes of these narratives, whenever any problem comes, any problem is any problem. As a practitioner of mindfulness, I always believe whenever there is a problem, we should first address our insight. What is happening here? Why? What do we really want? Forget about the society, everything. So we need to address our insight. Answers are there. Solutions are there. Everything is there. The only thing is this, we need to change the direction to outside to inside. We are very compulsive human beings. Our nature, we feel very difficult to change the way we think, the way we feel, the way we experience. To change the narrative, we need to switch from this compulsiveness to consciousness, the awareness. And again, I'll repeat, as a practitioner of mindfulness, this can be very much done step-by-step process so that human being will be aware or conscious from the compulsive state. Now, whatever it is, suicides or taking alcohol, any kinds of thing, it is nothing and nothing but the compulsion. And we are thinking it is impossible to come out of this. Moreover, whenever we include other people as a part of ourselves, understanding the way it is functioning, the life functions, our flexibility will grow. That means from
inflexibility to inclusion, from only living to life. And for parents community, let us learn more than to teach. So thank you so much. Let us build a compassionate world and let us make it happen in the real sense of the term. Thanks once again, ABCD for, International Foundation, for conducting such an important session today. The wonderful session. Sure. And once again, thank you, Malavika ma'am, the wonderful session. Yeah, I would like to invite our another guest speaker today. So आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पॉसिबल है तो वीडियो ऑन करके रखें ताकि इन सबका इंटरेक्शन हो. Let's welcome next guest, Dr. Harvandan Beti ma'am. She is a psychiatrist and bestseller author. So welcome ma'am, and Thank you, Mr. Bhavar. Thank you so much. तो नमस्ते इंडिया. हम लोग सेलिब्रेट तो कर रहे हैं इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन डे, पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी कंट्री में. तो मैं आई एम गोइंग टू स्पीक हिंदी में ज़्यादा, ताकि हमारी जो जनता है वो उसे समझ सके. तो जितने भी स्पीकर्स ने अभी पहले बोला है, तो थोड़ा सा उसका आपको एक समरी हिंदी में देना चाहूंगी बिफोर मैं अपने खुद के टॉपिक के में आगे जाऊं. हाँ, आत्महत्याएं हो रही हैं. जिंदगी जीने के लिए लोग अगर 90 साल पे भी कोई हो तो उससे पूछे तो जीना चाहेगा. तो सुसाइड बहुत पैराडॉक्सिकल हो जाता है. एक ऐसी स्थिति हो जाती है जिसे समझना मुश्किल हो जाता है कि हर कोई चाहता है कि वो जीवित रहे, तो ऐसा क्या चाहता है कि कई लोग मृत्यु को पाना चाहते. और अब ये कई लोगों का कारण ये कई लोग नहीं रह गए, ये बहुत 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 सारे लोग हो गए हैं. इतने सारे लोग हो गए हैं कि जिसे कहते हैं पानी सिर से तो बहुत ऊपर निकल गया है. तो इसलिए बातचीत करनी तो बहुत जरूरी है. क्या होता है ना कि जब हम बातचीत करते हैं तो एक तो जो भेदभाव है वो थोड़ा कम होता है ना. दूसरा ये होता है कि जानकारी हमें प्राप्त होती है. क्या पता हमारी जानकारी मिथ्याओं के ऊपर हो, और जो गलत जानकारी होती है उसका जो इंजाम होगा ना, एंड पॉइंट होगा, वो गलत ही होने वाला है. तो अगर हम देखें स्टैटिस्टिक्स हमारे पास 2001 से आगे आ चुके हैं. हमारे पास अभी स्टैटिस्टिक्स 2002 के भी है एज पर बोथ नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया एंड WHO. तो इन दोनों स्टैटिक्स से हमें क्या पता चल रहा है कि ग्लोबली जो सुसाइड्स हो रहे हैं उनमें से हमारे जो इंडियन मेल्स हैं उनका सुसाइड रेट 2 गुना ज्यादा है, और जो इंडियन फीमेल्स हैं उनका 6 गुना ज्यादा है. तो हमारे लिए तो ये बात करनी बहुत अत्यधिक अनिवार्य हो जाती है. और यूथ 15 to 29 ईयर्स मैक्सिमम है. यही हमारा नेशन है, यही हमारे नेशन बिल्डर्स हैं, और इनके कारण जानने तो बहुत जरूरी है. तो कारणों के बारे में बातचीत की गई है. और माइंडसेट क्या होता है उस समय जब पर्पस ऑफ लिविंग नहीं रहता ना, जब जिंदगी का कोई पर्पस ही नहीं रहता, उस समय ऐसी स्थिति आती है कि कोई होप ही नहीं है. ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, ऐसी स्थिति में नहीं जाना है हमें, पर हम जाते हैं बहुत कारणों से. तो क्या है हमारे जो रेड हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, उनमें मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि आज हर दूसरे इंसान को या तो हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है, दोनों भी हैं. तो हर हाइपरटेंसिव और हर डायबिटीज इंसान नहीं सुसाइड कर रहा है, शुक्र है इतना परमात्मा का. जब आप कोई भी बीमारी को सही समय पे नहीं इलाज करेंगे और उसके कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद आप जब बेड रिडन होंगे या ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होंगे जैसे आपकी किडनी फेल हो जाएगी, जिसके लिए इलाज लेने के लिए आपको हर चौथे पांचवें दिन अस्पताल, उसके बाद दूसरे दिन तक पहुंचना पड़ेगा, या फिर आप बेड रिडन हो जाएंगे. ऐसी स्थिति में जो हमारे ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं वो इंसान आत्महत्या कर रहे हैं, ना कि सिर्फ लाइफस्टाइल डिजीज होने से. हाँ, हमें लाइफस्टाइल डिजीज रोकनी है, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब ही ये है कि हमारी कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल खराब हो गई है. पर ये कतई नहीं है कि अगर हमें बीपी हो रहा है, या कोई ऐसी स्टडी मेरे तो अध्ययन ज्ञान में नहीं है कि जहाँ बीपी जिसको हो गया तो वो जाके सीधा ही आत्महत्या कर रहा है.
तो ये भी जानना जरूरी है कि अगर आपको हो गया है बीपी, अगर हो गई है डायबिटीज, अगर हो गया है हार्ट डिजीज, तो प्लीज इलाज ले लीजिए। उस स्थिति तक आप ना वेट करें कि कहाँ कॉम्प्लिकेशन हो और फिर आपको ये सारे रास्ते पकड़ने पे वो मजबूर करें। तो ये कुछ समरी मैंने सोची अनिवार्य है, हिंदी में जानकारी देनी अति अनिवार्य है। तो अब इसके बाद जो मेरा टॉपिक है वो है रेड अलर्ट साइंस, मतलब खतरा, खतरे की घंटी। तो खतरे की घंटी जब बजती है ना, तो वो घंटी बज जाती है। जैसे स्कूल की घंटी बज गई तो बज गई, अब रिसेस है, अब पढ़ने का समय है, अब खेलने का समय है, ऐसे ही हमें उठने का समय है, ऑफिस जाने का समय है। तो ये खतरे की जो जिंदगी की घंटी है, ये क्या है? तो जब इंसान आत्महत्या के बारे बार बार बोले, वैसे तो हमें पहली बार ही सतर्क हो जाना चाहिए, पर खतरे की घंटी तब है जब वो बार बार बोलना शुरू करती कि मुझे मरना है, मुझे मौत चाहिए, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। सिर्फ इतना ही बोल दे बार बार, इस स्थिति से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, और बोल रहा है वो बार बार। फिर वो मौत के बारे ऐसे बात करे कि मतलब ऐसे अजीब तरीके से बात करे कि आपको लगे कि मतलब ये बात क्या कर रहा है यार। मतलब ठीक है, हम लोग कभी जिंदगी मौत के बारे बात करते हैं, पर उस इंसान का जो बातचीत करने का तरीका है ना, तो अगर ऐसे इंसानों के साथ आपका कभी सामना हुआ है, और पहला प्रत्यक्षी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर कम्युनिटी से कोई भी हो सकता है, तो उस समय आपको बहुत अजीब लगेगा उसकी बातचीत। तीसरा, व्यवहार, जहाँ की मैडम ने बोला कि घर वालों को सबसे ज्यादा पता होता है, और उसके बाद जो पता होता है वो हमारे टीचर्स हैं। तो इन दोनों का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। व्यवहार बहुत बदल जाए बच्चे का, अब आपको अगर पता ही नहीं है, घर में आपके पास टाइम नहीं है, या स्कूल में भी अगर आप नहीं अपने बच्चों पे इतना ध्यान दे पा रहे जिस भी कारण, हम यहाँ पे किसी पे ब्लेम गेम नहीं खेल रहे हैं, हमें सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो अगर हमें अपने बच्चों का व्यवहार पता होगा ना, और तो फिर उसमें जब बदलाव आते हैं, तो आप एक बच्चा देखो गुमसुम बैठा हुआ है, किसी से बात नहीं करता, झलकती है जब आप आत्महत्या के बारे सोच रहे हो तो फ्रेश नहीं दिखने वाली, झलकती है उदासी आपके चेहरे से। तो अगर वो बच्चा एकदम बड़ा खुशहाल हो जाए, एकदम खुश हो जाए, तो ये मत सोचिएगा, घर वाले ये मत सोचेंगे, टीचर ये मत सोचेगा कि भी सब कुछ चंगा हो गया, अब तो एवरीथिंग इज गुड, ये तो मेरा बच्चा उदास था, अभी तो खुश हो गया। ऐसे चुटकियों में जिंदगियां नहीं बदलती हैं। जैसे मैडम ने बोला, अनलेस कोई बहुत इम्पल्सिवली कर ले, तो चुटकियों में तो कुछ होता नहीं है जिंदगी में। तो क्या ये नहीं पॉसिबल कि उस इंसान ने ये सोच लिया है कि अब परमानेंट मेरी मुसीबतों का मैंने एक आई हैव अ पॉइंट, आई हैव अ सॉल्यूशन टू माय प्रॉब्लम, कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और वो क्या है? वो है मैं आत्महत्या कर लूं। तो उस समय हमें बहुत सतर्क हो जाना है। एकदम किसी इंसान को आप देखो जो दुखी है, दिनों से महीनों से परेशान है, और अगले दिन आपको आके गुड मॉर्निंग कर रहा है, हंस खेल के बात कर रहा है, तो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है ये हमारे लिए। फिर वो इंसान को जीना तो है नहीं, तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि उसकी एक्टिविटीज में उसको हार्म होगा कि नहीं होगा। तो वो ऐसी एक्टिविटीज करता है जिसमें उसको खतरा हो सकता है, तो नशा करने लग जाता है। क्वेश्चन मैंने पढ़ा जिसका इंसान अब मैं जवाब देने वाली हूँ, रेकलेस एक्टिविटीज करता है, जिसका शायद जवाब मैं लेट में दूंगी, पर हाँ, शराब पीने लग जाता है ज्यादा, या फिर बहुत रैश ड्राइविंग करता है, क्या फर्क पड़ता है, मरना है तो मरना है, कैसे भी मरना है, ऐसे ही मर जाऊं, किसी भी तरीके से मर जाऊं मैं। और या फिर वो ऐसी कुछ हरकतें करेगा, ऐसे ही पंगे लेगा लोगों से, उसको किसी चीज का डर नहीं है। आप डरना है तो आपको डरना पड़ेगा, क्योंकि आप शायद चाहते हैं ना उस इंसान को या इंसानियत को कि कहीं गवारा ना हो जाए, तो उसको तो कोई डर नहीं है, उसने तो मृत्यु को अपना लिया है। तो ये भी एक रेड अलर्ट, रेड फ्लैग, खतरे की घंटी है हमारे लिए। अपनी बड़ी प्रिय चीजें, कई जैसी चीजें होती है ना, हम नहीं देना चाहते। मैं तो बुक्स अपनी नहीं दूंगी किसी को, मेरे को बहुत प्रिय है, आप कुछ और ले लीजिए तो ठीक है। तो ऐसे सब लोगों के लिए बहुत प्रिय वस्तुएं होती है, नहीं देते किसी को, पर अब तो उसको ये कई काम की नहीं है, तो बांटने लग जाते हैं, ले लो भाई जो चाहिए ले लो, मेरे किसी काम की कोई चीज है ही नहीं, ये दुनिया ही मेरे काम की नहीं। और कई इंसान ऐसे होते हैं कि वो इसके साथ ऐसी बातचीत करते समय विल लिखने लग जाते हैं, और जरूरी नहीं है कि मतलब हर विल ऐसी ही स्थिति में लिखी जाए, पर इस मनोस्थिति के साथ कोई इंसान अगर विल लिख रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है, तो बात करिए।
थीम ही ये है कि बात करिए। आपकी बात करने से ना कभी जिसके मन में नहीं है वो आत्महत्या नहीं करेगा, जान इतनी प्यारी है। और हो सकता है कि आपके पूछने से जो उसकी हिचकिचाहट है वो दूर हो जाए और वो जो है आपको बता। और सुसाइड नोट क्या होता है कि जब कोई सुसाइड नोट लिखता है ना तो वो अपनी भावनाएं सारी प्रकट करना चाहता है जो वो प्रकट नहीं कर पाया था। तो ये ऐसे ही ठड़क ठक 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 से लिखता हो। अगर उसे लिखना है, कई तो बिना लिखे चले जाते हैं, और अगर उसे लिखना है तो इत्मीनान से वो लेके एक डेट उसने मन में सोच ली है तो लिखता है, हर भावना को लिखता है। और ऐसा कोई नोट आपके हाथ आ गया और आप फिर भी चुप रहे क्योंकि आपको लगता है कि मैं इसकी बड़ी मदद कर रहा हूँ, इसके साथ तो स्टिग्मा होगा, मैं इसको समझा देता हूँ। कुछ कार्य है ना आपको जानने हैं। लेक्चर का मतलब ये है कि कम्युनिटी को जानकारी होनी चाहिए। लेक्चर का ये मतलब बिल्कुल कतई नहीं है कि आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं उनका कार्य खुद करने लग जाएं। हर इंसान का अपना कार्य है। इतना इतना पढ़ाई की, इतना एक्सपीरियंस के बाद उसको उसकी फैमिली मेंबर्स को बताइए। अगर आप किसी और के स्कूल में कोई सुसाइड नोट आपके हाथ में आता है या उसके घर वाले को बताइए, किसी को तो बताइए। कोई नहीं है तो पुलिस को बता दीजिए। ये कॉन्फिडेंशियलिटी इशू नहीं है। 2 इश्यूज हैं, 3 इश्यूज हैं, तीसरे का तो इससे कोई लिंक नहीं है, तो 2 इश्यूज हैं। अगर कोई आपको लिख रहा है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आपको लग रहा है कोई ऐसी चीज आपको बहुत आपकी पकड़ में आई है, सिर्फ शक करने पे तो आप तैनात रहेंगे। पर अगर आपके पास सबूत आ गया है, जैसे सुसाइड नोट आपके हाथ में आ गया है, आपको नहीं पता उस इंसान के बारे में, वो अपने कहीं अकेले रह रहा है। ये बहुत हो रहा है बिग सिटीज में, लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ना बाप बाप का नंबर देते हैं, ना किसी नोन का नंबर देते हैं। तो आपने यू कैन इन्फॉर्म द पुलिस जब वो सुसाइडल हो या वो होमिसाइडल हो। और ये आपको जब भी ट्रीटमेंट देनी है या जब भी आपको थेरेपी शुरू करनी है तो आपको अपना कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्ट्रैक्ट बताना है। और समाज के सब सदस्यों को ये पता होना चाहिए कि ये उनकी एज अ सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इसके साथ मेरे रेड अलर्ट साइंस का लेक्चर जो है, जो बातचीत है, वो इधर खत्म हुई। और मिस्टर भावर्ड जो दूसरे स्पीकर हैं, अगर आप उनको बुला लीजिए तो हम अपनी बातचीत जारी रखते हैं। थैंक यू। और कोई प्रश्न तो है मैम तो अगर अभी पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं, इनमें पूछना है मतलब जैसे चैट बॉक्स में है। मेरे लिए दोनों चीजें आई एम एक्सेप्टेबल, ओपन टू एवरीथिंग। यस यस, हम लोग क्वेश्चंस सभी के लेके रखते हैं, सभी क्वेश्चंस प्रिपेयर रखिए। एंड नेक्स्ट स्पीकर्स के बाद हम लोग क्वेश्चन स्पेशली रखेंगे क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी हैं एंड आप सभी से कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट एक चीज मैं को यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। अभी हम लोग सब लोग जुड़े हैं तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स और बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट्स भी होंगे। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, आप चाहते हैं किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है या कोई ऐसे आपको दिखते हैं, तो ऑफकोर्स आप इन सभी को कुछ ना कुछ एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन सभी से बात करना चाहिए या फिर उस पर मतलब अपने इनसे कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो ये कोशिश करें। एंड ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, ग्राफोलॉजिस्ट शेयर करें। तो एक और चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। मैं जस्ट कुछ मैंने पहले ग्राफोलॉजी सीखा था एंड बहुत सारे ऐसे वेज होते हैं जहाँ पे लोगों का जो सुसाइडल जो साइंस हमने अभी शेयर किया कि जो अलर्ट्स होते हैं वो दिख जाते हैं। फिर रिसेंटली कुछ सुसाइड केसेस थे जब मैं मेरे मेंटर से समझ रहा था वो चीजें, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे भी चीजें होती है जो हैंड राइटिंग से भी एनालाइज किया जा सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि हम कैसे वो हेल्प कर पाए। एंड जब भी अभी ये ओपन वेबिनार है, सबको रिकॉर्डिंग जाएगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, इसीलिए मैं ये बात शेयर करना चाहूंगा। प्रॉब्लम्स तो हमेशा हर एक के लाइफ में होते हैं, प्रॉब्लम इसके लाइफ में नहीं होते। प्रॉब्लम्स होगा तो ही लाइफ का मजा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी पर्सनली फील होता है कि हाँ, प्रॉब्लम्स के बिना तो लाइफ है नहीं। एंड एज ए हम बिजनेस में है, कोचिंग में है, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, तो हम प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे देखते हैं, नजरिए पे डिपेंड करता है। क्योंकि जितने बड़े इंसान, जितने बिजी, मतलब बहुत कुछ काम करने वाले लोग होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स उतने बड़े हो जाते हैं। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए शेयर करता हूँ। यहाँ पे जब ऐसा कोई थॉट आता है ना, तो आप किसी के प्रॉब्लम्स को एक बार देखो, चाहे तो यूट्यूब पे आप डाल के देखो प्रॉब्लम्स ये लोग के कितने बड़े हैं या
सर्च कर लो कि लोगों के प्रॉब्लम्स, तो आपको समझ में आएगा कि मेरे प्रॉब्लम के सामने तो इनका प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने क्या क्या नहीं किया। तो अब कितने ऐसे लोग हैं, तो एक गाना भी है उसमें, मेरा गम तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ गाना है, मुझे आता नहीं गाना, बट वो गाना जब आप सुनेंगे तब समझ जाएंगे कि अरे ये तो मेरे प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं। तो इम्पोर्टेंट ये है ना, हम क्या करते हैं, अच्छी चीजें हो रही है तब हम कंपैरिजन करते हैं, सामने वाले ने गाड़ी खरीद लिया, कार खरीद लिया, उसको अच्छा जॉब लग गया, ये कर लिया, वो किया। तो प्रॉब्लम्स में भी कंपैरिजन करो ना, अगर वहाँ पे कंपैरिजन करना है, उसके प्रॉब्लम कितने बड़े, मेरे तो कुछ भी नहीं, फिर भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ करने का इच्छा वहाँ पे जनरेट होगा। मैं तो इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत कुछ शेयर किया, उसके लिए ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। फिर एक गेस्ट स्पीकर की ओर चलते हैं। We have very experienced guest speaker with us today, and the next speaker is Dr. Gagandeep Kaurnan. So, welcome, ma'am, on this wonderful platform. She is a clinical psychologist and very experienced person. Welcome, ma'am, on this wonderful platform. And over to you. थैंक यू सो मच यार, इट वाज अ प्लेजर लिसनिंग टू ऑल ऑफ यू। इनफैक्ट बेदी मैम ने काम बहुत आसान कर दिया। आई एम सॉरी मैंने अभी ज्वाइन किया, आई वाज लिटिल ऑक्यूपाइड, बट आई लव्ड व्हाट शी वाज सेइंग। इन मैम ने जहां पर बात खत्म करी वहीं से शुरुआत करी हूं। मेरा सवाल है, व्हाट आर द बेसिक क्वेश्चंस दैट यू शुड आस्क अ पर्सन हु इज सुसाइडल। आई विल टेक लेस देन 5 मिनट्स एंड आई विल वाइंड अप इन दोस मिनट्स। द फर्स्ट वन, देखो बहुत बड़ा मिथ होता है कि अगर कोई व्यक्ति मरने की बात कर रहा है, यू वांट मी टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश, इज दैट सो? I've got a message up here. Preferable, please speak in Hindi. We are a nation doing service to a nation. मुझे मैसेज आया है यहाँ पर कि इंग्लिश में बोलिए, तो आई थॉट आई आस्क। अच्छा ठीक है, मैं हिंदी में ही बात करती हूँ। गाइस, मैम ने जहाँ से छोड़ा हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। पहली चीज, जब कोई व्यक्ति सुसाइडल होता है तो आपको, बहुत लोगों के मन में डर होता है यार, अगर मैंने पूछ लिया कि तुम्हारे मरने का ख्याल तो नहीं है या मरने का विचार तो नहीं आ रहा है, सो लॉट ऑफ पीपल थिंक यू नो व्हाट विल हैपन। ऐसा तो नहीं है कि वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा। इनफैक्ट एपीए गाइडलाइंस के हिसाब से सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा मिथ है। मरने वाला मरना नहीं चाहता है, इसलिए वो बात कर रहा होता है, वो सुसाइड नोट भी लिख रहा होता है कहीं ना कहीं, दैट इज द लास्ट क्राई आस्किंग फॉर हेल्प। इसीलिए अगर कोई किसी भी रूप में मरने की बात करे या गूगल पर इन शब्दों को यूज करे या सर्च वर्ड्स उसके सबसे ज्यादा हो या किसी भी रूप में इसका जिक्र करे, तो आपकी घंटी खड़ी हो जानी चाहिए एंड आपका पहला सवाल ये होना चाहिए, क्या मरने का कोई प्लान बनाया है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क। सेकंड, उस प्लान में आप चेक करोगे कि सामने वाले का इरादा क्या है। सो देयर आर 3 थिंग्स दैट वी असेस। ये डेथ विश है, सुसाइडल आइडिएशन है या सुसाइडल इंटेंट है। डेथ विश मतलब धरती फट जाए, कुछ हो जाए, कल मैं नींद से ना जागूं, तो मरने की इच्छा है मगर कोई प्लानिंग नहीं है, ठीक है, दैट्स अ डेथ विश। सुसाइडल आइडिएशन, मरने का ख्याल आता है, बहुत बार सोचा आत्महत्या कर ले, मगर ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया है, या प्लान है भी तो आई हैवंट डिसाइडेड हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। मे बी मन करता है कि शायद 7वें छत से मैं गिर जाऊं, फ्रॉम द 7th फ्लोर मैं कूद जाऊं। सो द आइडिया इज देयर बट द प्लान इज नॉट फुली मेड। डिफरेंस क्या है, डेथ विशेस में मैं एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं हूँ, मतलब मैं खुद को नहीं मार रही हूँ, मैं मर जाऊं, आई एम अ पैसिव पर्सन, राइट। इन सुसाइडल आइडिएशन मैं मरने जा रही हूँ, मैंने प्लान, मैं खुद को खत्म करने की कोशिश में हूँ, ये विचार है मेरे दिमाग में। इन सुसाइडल इंटेंशन, मेरा आइडिया भी है और इंटेंट भी क्लियर है, तो मैंने तय कर लिया है रात के 4 बजे जब सब सो रहे होंगे अपना कमरा बंद कर कर, प्रोवाइडेड आई एम गोइंग टू जंप फ्रॉम द 10th फ्लोर एंड देयर इज नो वे एनीबॉडी कैन रीच आउट टू मी। ये 3 चीजें हम जरूर चेक करते हैं। क्यों करते हैं? अगर डेथ विश है तो घंटे की, मतलब जो खतरे की घंटी है वो सिर्फ 1 नंबर पे बजी है। If there is suicidal ideation, the severity has increased. If it is intention, then this is at level 3. That means at level 3, there is no other option but 24/7 vigilance, या आप एडमिट करोगे क्लाइंट को। आप घर पे ऐसे नहीं छोड़ोगे, घर पर हो तो कोई ना कोई 24 घंटे होगा, शार्प ऑब्जेक्ट्स आप किनारे करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीथैलिटी एंड इंटेंशनैलिटी। ये क्यों जरूरी है भाई? हमने देखा है आजकल जनरेशंस में, खासतौर पे यंग जनरेशन में एक चलन निकल आया है, व्हेन दे आर ट्रबल्ड दे कट देयर हैंड्स। कोई भी बात होती है मतलब काट लेते हैं हाथ को। यूजुअली कट्स आपको उनके रिस्ट पे दिखेंगे, कान के यहाँ दिखेंगे, आर्म्स पे दिखेंगे, थाइस पे दिखेंगे, इवन बैक ऑफ द नेक समटाइम्स दे मेक कट्स देयर। अब ये सुसाइड नहीं है। सुसाइड और सेल्फ हार्म दोनों में अंतर है।